it very simple. The tough times bring strong men, and strong men bring easier life. Easier life brings weak people. Weak people bring tough times. The weak people bring tough times. So जब हमारे देश में अगर हमारे लिए वॉरियर्स तैयार नहीं होंगे, as we say that India is approaching, we are slated to become third largest economy in the world, global leader, just possibly after China and US by in next 5-7 years. In 2030, we are already fifth largest. Very nice to meet you. Good morning from Amsterdam. And from Amsterdam. Yeah, we are very excited for many reasons. First, Kota Junction podcast is actually to highlight stories of people like you. तो जितने भी अलग-अलग क्षेत्र के लोग निकले हैं कोटा से या कोटा आए हैं, जिन्होंने कोटा की स्टोरी में किसी भी तरह कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे बिजनेस फील्ड से हों, एजुकेशन फील्ड से हों, हम उन्हीं सब की स्टोरीज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोटा वासियों और कोटा के बाहर भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. तो उसी सीरीज में शायद आपका 6th एपिसोड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर द कंट्री एंड कंट्रीज हिस्ट्री, especially from a defense perspective. कारगिल विजय दिवस आने वाला है और काफी खुशी है कि हम आपका समय इसके लिए ले पाए हैं. और आप पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि इंडिया और इंडियंस जो भारतीय लोग हैं और सेना, इसमें एक कुछ खास संबंध है इमोशनल पर्सपेक्टिव से. मूवीज, रोजमर्रा की जिंदगी में जब लोग बात करते हैं अखबारों में या फिर मोटिवेशन के हिसाब से, तो how would you describe ये क्या रिलेशनशिप है अपनी भारतीय सोसाइटी और सेना के बीच में? Thank you, Pallav, and it is absolute pleasure meeting you after many days through technology, many years in fact. And Pallav और इसकी टीम जो एक कोटा जंक्शन का आइडिया आया है to highlight the achievements of people of Kota is fantastic. And I personally wish his entire team Kota Junction a very big success. And I am sure the kind of work you people are doing, आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं, lot of people not only from Kota, from country and internationally will be part of your will visit your channel और वो सब्सक्राइब करेंगे जरूर और देखेंगे, क्योंकि उनका इस चैनल से बहुत सारा वैल्यू एडिशन होगा, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस जो आप लोगों के शेयर करेंगे इस चैनल से, वो उन तक पहुंचेंगे. And it will be fantastic. And now coming specifically to today's this thing, we are on Kargil Vijay Divas, 26th July, and Army, Indians, and motivation relation, old relationship. Indians, like if we talk, अगर हम बात करें, हमारी तो बहुत पुरानी, सबसे पुरानी दुनिया की सभ्यता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होती है और हमने तब से अब तक हमारी सभ्यता सलामत रही है, इंटैक्ट रही है, and we have been growing, and today we are the global leaders. So it is not possible by purely by, it is the Indian community, भारतीय जो हम सब मिलकर देश के लिए करते हैं, उसमें सेना का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है. साथ में सेना का जो योगदान है वो है हमारे देश को प्रोटेक्ट करना 24/7 फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, फ्रॉम इंटरनल थ्रेट्स. भारत के जो हमारे आसपास जो हमारे दुश्मन देश के बाहर होते हैं या देश के अंदर होते हैं, वो उससे प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारे देशवासी 24 घंटे 24/7/365 can work, can sleep in peace, can work hard and produce wonderful results for the country. And people like you are doing fantastic job. So हमारे देश की सेनाएं हमारे देश के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हैं, हमारे देश के मोराल में, हमारे देश के ग्रोथ में. और हम देख रहे हैं कि today we are talking about India, because Indians have arrived globally. The journey and the future belongs to us. The past belongs to us, the present belongs to us, and the future also will belong. वंडरफुल. या आई थिंक काफी सारी चीजें आपने जो बोली है वो रेजोनेट करती है काफी ऑडियंस के साथ भी. आपका थोड़ा मैं समय पीछे ले जाना चाहूंगा हिस्ट्री में, मतलब कहाँ पे आपका जन्म हुआ, ऐसे आप कैसे सिर्फ आपका रुझान हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताएं ऑडियंस को. So we go back
around 50 or in late 60s. I was born in 60s in UP, Western UP. Lot of people ask me, sir, आप कौन से किस जगह से हो, कौन से स्टेट से हो? मेरा तो I'm from India. क्या आप इंडिया करें? आप कहते हो कि I'm from India, क्योंकि मैंने सेना में और उससे पहले भी मेरा जन्म, जैसे मैं बताया, वेस्टर्न में हुआ। स्कूल्स इन वर्ल्ड लोकेटेड इन देहरादून में, और वहां पर जाना बहुत मुश्किल है। प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1922 में इसकी शुरुआत करी थी। उससे पहले इसको इंपीरियल कैडेट कॉलेज जाना जाता था, रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। इसमें सिलेक्शन हर एक राज्य से एक सीट होती है, डिफिकल्ट होता है सिलेक्शन होना उसमें थोड़ा सा। आई स्पेंट माय अर्ली एजुकेशन in RIMC Dehradun, which is now in Uttarakhand, and thereafter I joined National Defence Academy, which is at Khadagwal, NDA. So initially when I joined NDA, मैं Air Force के लिए motivated था, Air Force opti था. Interesting. But then I switched courses, mid-course correction कहें, so that I fell in love with Army, and I changed my choice. मैंने अपनी choice Air Force से Army के लिए change करी. So कश्मीर में मेरे को, जैसा मैंने बताया कि उस टाइम पे कश्मीर, आज तो बहुत सुधरा हुआ कश्मीर है 370 हटने के बाद। okay. उस टाइम पे कश्मीर के हालात अच्छे नहीं थे, तो मेरे को बात पे भी सर्व करने का मौका। या किस ईयर की बात है ये आप बोल रहे हैं? 90s की बात कर रहे हैं हम। 90s में वहां पर टेररिज्म पीक पर था, और टेररिज्म को हैंडल करने के लिए वहां पर स्पेशल एक राष्ट्रीय राइफल करके एक यूनिट्स होती थी, जो अभी भी है, वो स्पेशलाइज यूनिट्स होती थी। एंड आई वाज कमांडिंग एन आउटफुट इन 5 राष्ट्रीय राइफल्स, जो कि इनिशियली में साउथ कश्मीर में थी, बाद में नॉर्थ कश्मीर की तरफ चली गई थी। और हमारा मतलब जैसे टेररिस्ट से मिलना जुलना कहेंगे ऐसे, लेकिन एनकाउंटर। सो वी यूज्ड टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मीटिंग्स विद देम, not friendly meetings, hostile meeting, and had the opportunity of sending and killing a lot of these anti-nationals, encounters, these terrorists to the right place. उनको सही जगह पर, उनकी जो जगह है वहां पर उनको भेजने का मेरे को मौका मिला। तो मैंने और मेरी टीम ने काफी उस टाइम पे एलिमिनेशंस और काफी ये हुए हैं, जो कि हमारे देश में उग्रवाद टेररिज्म फैलाते थे, तो उनको मारा भी गया। और क्योंकि ज्यादातर उस टाइम पे सरेंडर नहीं करते थे, तो इट यूज्ड टू बी अ वेरी फियर्स बैटल। उनके पास हथियार अच्छे होते थे, रॉकेट लॉन्चर्स होते थे, आरपीजीज होते थे, रॉकेट लॉन्चर में AK-47 होती थी, ग्रेनेड्स होते थे, तो वो लोग काफी और लाइट वेट होते थे, और लोकल सपोर्ट भी रहता था कई बार डर की वजह से। तो उन हालात में सर्व करने का मौका मिला। और फिर आया 99, तो आई वाज अ यंग मेजर दैट टाइम, और इसी बटालियन के साथ था मैं, और हमारे को टास्क मिला कि शुरू में तब उस तरह से बात आगे चली। और उसके बाद आई हैपन टू बी पार्ट ऑफ वेरियस आउटफिट्स, इन्फेंट्री डिवीजन आल्सो आई वाज देयर। आई वाज पार्ट ऑफ ब्लैक कैट कमांडोज आल्सो, जस्ट प्रायर टू दैट जिसको हम ब्लैक कैट कमांडोज, आई वाज अ ट्रेनर देयर। तो इस तरह से मेरा आर्मी में एक डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट जगह डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा है, डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा। एज ए इंस्ट्रक्टर आल्सो in School of Artillery, as a commando trainer also, as in staff also. तो फौज एक हर तरह का मौका देती है, and I was fortunate to be and I, as they always say, कि once a फौजी always a फौजी. I mean, it is always, your blood is not red, it is olive green. So even after retirement, I see myself as a soldier only. That is it. Very nice. Thank you for the summary. मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें काफी सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। थोड़ा फॉर्मेटिव इयर्स की तरफ चलते हैं। तो आपने बोला RIMC, फिर NDA। थोड़ा ऑडियंस, स्पेशली जो यंग ऑडियंस है, उनको अवेयर करने के लिए, थोड़ा इंफॉर्मेशन देने के लिए थोड़ा उस पर प्रकाश डालें कि व्हाट इज RIMC एग्जैक्टली, या NDA किस तरह नॉर्मल जो अंडर ग्रेजुएशन पाथ होते हैं उससे अलग है, और ऑब्वियसली कैसे कोई आर्मी में जाना चाहता है तो, या एयरफोर्स में या नेवी में, तो कैसे इस पाथ को वो अडॉप्ट कर सकता है। बिल्कुल पल्लव, वेरी फाइन क्वेश्चन। एंड व्हाई शुड पीपल बी जॉइनिंग आर्मी एट ऑल व्हेन वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस? तो ये भी हमारे दिमाग में आता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं,
और क्यों करना चाहिए वो हम थोड़ा बाद में है। ठीक है। तो पहले कि कैसे RIMC is a preparatory school. It is one of its only kind. Okay, so one of its kind, which is at Dehradun, started more than 100 years back. So we celebrated its centenary last year. और सेंटेनरी और उससे इसका जो इनॉग्रेशन प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था टू मेक ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियंस टू ज्वाइन ब्रिटिश इंडियन आर्मी. तो इट वाज इन 1922 और RIMC का जो लोगो है वो सिर्फ वो सेम जो लोगो प्रिंस ऑफ वेल्स का होता था इस ट्रेन का सेम लोगो इज यूज्ड फॉर RIMC इवन टुडे, बट उसमें ऑस्ट्रिच फेदर को पीकॉक फेदर में चेंज कर दिया और माइनर चेंजेस. गेटिंग थ्रू इज थ्रू ए कंपटीशन. उसका साल में 2 बार एग्जाम होता है और फिर इंटरव्यू का प्रोसेस होता है. तो RIMC में आप सेलेक्ट होते हैं और RIMC में इट्स ए जॉइंट सर्विसेज विंग, यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के पढ़ाई के साथ साथ आपको एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट किया जाता है. इसको हम क्रेडल ऑफ वॉरियर्स भी कहते हैं. इनफैक्ट इंडिया के जो सबसे पहले परमवीर चक्र अवॉर्डी थे मेजर सोमनाथ शर्मा, ही वाज आल्सो फ्रॉम RIMC. Okay, wow. So plenty of generals, army commanders, plenty of chief of army staff, chief of air staff, naval staffs have come from this school. So after RIMC, how many seats are there in this school? Like generally one per state we have, one per state. Aajkal we have about 28 states, so about 28-29 seats are there, including union territory. Oh, so it's some not a lot. Some states from northeast combined have 1 seat. Okay, so about 28-29 vacancies are there. Difficult to get through. But yeah, seems like through, very difficult. Yeah, because very difficult. Thousands of students appear. One fellow gets through amongst them, and but once you get through, life is it's a life-changing kind of thing. It's a beautiful place. Lot of huge campus, 5-6 football grounds, courts, swimming, riding, everything, name a thing, you are exposed to, and not only exposed to, you become apt at it. You actually become good at it. So after RIMC, then generally you are expected to appear for National Defence Academy exam. But since you get trained, most of your course people happen to join NDA from RIMC. Okay. NDA is actually the thing from where you will join the armed forces. National Defence Academy, पुराने टाइम में, हमारे टाइम में तो 11वीं के बाद हम ज्वाइन करते थे, 12वीं नहीं होती थी, 12th नहीं होती थी. पर करंट स्टेटस जो है इट इज आफ्टर क्लास 12, तो 12वीं के बाद. लेकिन इसके लिए आपको 10वीं 11वीं से ही तैयारी शुरू करनी पड़ती है, बिकॉज फॉर ज्वाइनिंग आर्म्ड फोर्सेस यू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट. It is not any normal career or something. It's a way of life, I would put across. So आप NDA के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो आपको एक कॉमन परसेप्शन होता है कि आर्म फोर्सेस मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए you have to be physically very strong, you have to be this thing. So it is more of leadership quality. It is more to do with leadership. Yes, you got to be physically strong, you got to be academically strong, but more than that, you need to be having certain leadership abilities that will help you go through get through in NDA. So NDA join आप 12th के बाद करते हैं, पर आपका एग्जाम 11th के बाद से शुरू हो जाता है, यानी कि somewhere around 16 and half to 19 and half की एज में आप ज्वाइन करते हैं. तो आपको you have to work backward. Okay, so firstly you must fill the form in time. It is released twice a year. Okay, sometime in June and sometime in January. Okay. UPSC की website पर available होता है. Those who really wish and are serious can also contact me, and we will leave our contact details for the benefit of youth, because post retirement I am actually working and helping out thousands of students join National Defence Academy and clear their SSB also. So एक पहले आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद रिटन एग्जाम होता है. रिटन एग्जाम के बाद जब आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं, और लेट मी टेल यू
रिटन एग्जाम में करीब 7 लाख लोग बैठते हैं नेशनल। तो नाउ गर्ल्स आल्सो अपीयर, सो बॉयज। अच्छा, एनडीए में गर्ल्स भी होती है? या अभी अच्छा, ये पिछले 1 साल से शुरू हुआ है। इसकी भी थोड़ी सीट के बारे में थोड़ा आइडिया दें ऑडियंस को, कितने बड़े का बैच होता है, कितने लोग गर्ल्स बॉयज, मतलब? तो वही आई एम कमिंग, 7 लाख लोग में से करीब 7,000 रिटन क्वालिफाई करते हैं, और 7,000 में से करीब 400 join NDA. Okay, the strength is getting increased with the women entry being opened. तो पहले बैच में करीब 19 लड़कियां थी. Ultimate aim is to bring it to 100 for the girls. और men 100 boys out of की 400. out of 400 अभी है. See, boys की 370 है, और about 20-30 gradually girls की entry अभी बढ़ increase रही हो रही है. अच्छा, हाँ. So eventually it will come to about 450 or so, including boys and girls. Now 450. So when we talk of boys, say 370. So 370 में से bulk joins the NDA में आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों का होता है. तो 200 के करीब आर्मी के होते हैं, 200 के करीब आर्मी के होते हैं, करीब 70 to 80 are Air Force, and about 40 to 50 are Navy. अच्छा. So that is a broad breakup of Army, Navy, Air Force in the National Defense Academy. The training lasts for 3 years. 3 साल के लिए ट्रेनिंग होती है, और 3 साल के बाद आप आर्मी, नेवी, एयर फोर्स अपनी स्पेशलाइज्ड एकेडमीज में जाते हैं. जैसे नेवी वाले नेवल एकेडमी में चले जाएंगे, एयर फोर्स वाले इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाएंगे, और एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी में जाएंगे. एनडीए में आप यू हेल्प वर्क इन ए सिनर्जाइज्ड मैनर. तो आपको पूरी ट्रेनिंग शुरू में पहले 2 साल तो कॉमन होती है, और 5th और 6th में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एनडीए में ही शुरू हो जाती है. So NDA Air Force fellows start flying, the naval fellow do sailing and other naval activities, the army fellow do the typical army activities of tactics, strategy and firing and various other things. So all these things, but the life in NDA is superb. Let me tell you, it is very difficult to join. You need to have the right mindset. आपका mindset ठीक होना चाहिए, क्योंकि ultimately at a young age you will be commanding the most precious thing. The most precious thing, like in army, we command lives of people. So you got to be good to command them. You got to lead them in battlefield. अगर आपको युद्ध में उनको लीड करना है, तो आपको बेहतर होना पड़ेगा उनसे, उनको लीड फ्रॉम फ्रंट. सो आर्म फोर्सेस, द यंग ऑफिसर्स लीड. जैसे हम कारगिल वॉर की भी आगे बात करने वाले हैं, तो कारगिल वॉर में भी सारे यंग ऑफिसर्स, the average age was just 20 to 25. That was the mean is about 23 who laid down their lives. So it is a very young profile. Okay, so एक और थोड़ा सा मैं इस वक्त आपको बताना चाहूंगा. एक पिछले कुछ 1-2 साल से हमारे युवाओं के मन में एक कंफ्यूजन आया है अग्निवीर, अग्निपथ को लेकर. क्या है? तो अग्निवीर स्कीम जो थी या जो है, that is not at all impacting officers entry. So when you join NDA, it is not. क्या है अग्निवीर स्कीम? थोड़ा बताएं उसके बारे में. अग्निवीर स्कीम इज फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक. यानी कि अगर आपको आर्मी, नेवी या एयरफोर्स तीनों में एज ए जवान जाना है, जवान मीन्स एज ए नॉट एट द ऑफिसर लेवल एंट्री. इफ यू हैव टू जॉइन देम, द ओनली वे टू जॉइन देम इज थ्रू अग्निवीर. So they are Agniveer, Vayuveer for Air Force, the Agniveers. So there is a selection process. और अग्निवीर जब सेलेक्ट होते हैं, तो अग्निवीर में 4 साल का कमिटमेंट होता है. अच्छा, 4 साल के लिए आप ज्वाइन करेंगे. तो ये एक नई स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, और कोई तरीका नीचे के लेवल पर जाने का नहीं है. तो 4 साल में आपका पहला साल ट्रेनिंग का होगा, फिर आप वर्क करेंगे. यू विल गेट पेड थ्रू आउट द टाइम, फाइनेंशियली यू आर टेकन केयर ऑफ. और चौथे साल के बाद अभी तक ये है कि 25%, यानी कि सपोज 40,000 अग्निवीर में सेलेक्ट हुए,
पिछले साल जैसे 46,000 थे, उनके 1/4 25% विल बी रिटेन्ड, द बेस्ट ऑफ देम। 75% विल गो आउट सिविल स्ट्रीट। अब वो सिविल में जाएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी उनकी कुछ सीटें होंगी। अभी आने वाले टाइम में एक प्रपोजल, इसमें थोड़ा सा चेंजेस हैं, जो कि आप लोगों को ये शायद कोटा जंक्शन पे पहली बार पता चलेगा या दुनिया को, कि ये जो 25% जो रिटेन करने की परसेंटेज है, इट इज गोइंग टू बी रिवाइज टू 50%। इट विल बी रिवाइज टू 50% वेरी सून। तो अब लोगों के मन में एक बहुत शक और बहुत शंका थी, बहुत डाउट था कि हम 4 साल के बाद, हम तो पूरी जिंदगी सेना को देना चाहते हैं, लेकिन 25% ही, 1/4, 25% will only stay, 75% will go out. This is going to get changed in near future. From 25% we'll have 50% retention. यानी कि आधे बाहर जाएंगे, आधे रिटेन करेंगे। और उसके पीछे सरकार, गवर्नमेंट की, देश की सोच है, one that we want to keep the profile young. तो यंगर प्रोफाइल में आपके ज्यादा लोग होंगे, और जैसे जैसे आप एज बढ़ती है, क्योंकि आर्म फोर्सेस यू नीड लॉट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, यू नीड टू सर्व। आपको हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में सर्व करना पड़ता है, आपको डेजर्ट्स में सर्व करना पड़ता है, आपको जंगल्स में सर्व करना पड़ता है, तो फिजिकल फिटनेस हैज टू बी गुड। बट अपार्ट फ्रॉम फिजिकल फिटनेस, यू गॉट टू बी मेंटली फिट आल्सो। तो इवन इन अग्निवीर स्कीम्स, पहले भर्ती के लिए, जब पुराने टाइम में आपको याद होगा कि भर्ती के लिए पहले दौड़ने और भागने का बहुत ज्यादा फोकस होता था, आजकल पूरा फोकस रिवर्स हो गया है। पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना, उसके बाद जब आप सेलेक्ट होते हैं तब आप दौड़ भाग के लिए जाते हैं। इवन इन अग्निवीर, जो जवान एंट्री पे और ऑफिसर एंट्री पे भी लीडरशिप पे फोकस है, ना कि भाग दौड़ पर। हाँ, आप स्पोर्ट्स खेलिए, पार्टिसिपेट करिए, अच्छा करिए सब कुछ। तो ये एक मेंटल ब्लॉक जरूर मैं सभी युवाओं से कहूंगा कि जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टू कम आउट ऑफ दिस मेंटल ब्लॉक कि हमें सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना है, दौड़ भाग करनी है। दौड़ भागने से ही हम फौज में ज्वाइन कर सकते हैं। जनरली मीडिया में, मूवीज में थोड़ा वो इस तरह का एक इमेज बन गया है कि यू हैव टू बी लाइक एकदम 6 पैक, एकदम बड़ी बड़ी मसल्स, और कूदना और रोल करना। तो ये आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, even teenagers, even late teenagers and adults as well, who may want to go afterwards in the army. Impression है कि is associated with like a macho man image, exactly, man type image. मतलब I'll tell you very interesting thing. इंडिया की सबसे elite forces जो हैं, जिनको हम special forces कहते हैं, पैरा कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, I have been part of NSG also, I have been trained, जिनको ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है, या पैरा SF. And if you meet any पैरा SF commando who is trained to be a sort of a killer and to be able to survive in any condition, उसको ये कहता है कि किसी भी कंडीशन में आप, ट्रेनिंग इज वेरी वेरी अल्टीमेटली, I mean of different level, but when you meet them and you will talk to them, they look just exactly like you and me. You can't even make out from their face, they don't carry those 6 packs and high muscular body and things like that, and carry some kind of, so they are very deceptive. They will exactly, you will never believe it when you meet a para commando, oh, he's a para commando. So they look like a normal person, normal human being, absolutely normal human being. Of course, they are physically fit, and real fitness actually comes not from your body but from your mind. So they have a lot of skills, mental fitness, physical fitness and motivation. So ये perception जो लोगों के बीच में है कि अगर सेनाओं में आना है तो सबसे पहले hit the gym. No, don't hit the gym, improve yourself. So, इस पे एक चीज है, जैसे कि हमारे टाइम पे भी, because I also come from civilian background and many like other people, एक चीज है कि इंफॉर्मेशन है काफी, आजकल तो काफी बढ़ गई है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ना, बट स्टिल जैसे कि आपको स्पेशली कोटा की बात करें तो हर एक दूसरे घर में किसी का पड़ोसी का बच्चा वगैरह IIT या ये ना US में या फिर GRE या फिर, तो ये एग्जाम्पल से मिलना बहुत आसान है ना, और डॉक्टर से मिलना आसान है क्योंकि आप खुद ही जाते हैं डॉक्टर को दिखाने या फिर पार्टीज में या फिर कुछ शादी में, है ना। डिफेंस वाले पकड़ में नहीं आते, मिलते कम है। तो ये जो
परसेप्शन की जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसको ब्रिज करने के और क्या क्या तरीके हैं खुद से सेल्फ सर्विंग? मतलब एक बच्चा 15 साल का बच्चा है, वो उसको क्या, आप क्या चाहेंगे कि उसको पता हो, जिससे कि उसको एक रियलिस्टिक आइडिया रहे कि यह आर्मी का मतलब ये होता है? I you touched a very important issue. आज जब बच्चे, जैसे हम कोटा में ही हैं और कोटा में हम सुनते हैं तो आईआईटी, और आप सड़क पे निकलते हैं तो जगह जगह होर्डिंग्स, जगह होर्डिंग्स जगह उन्हीं को आइकन बनाया हुआ है। हाँ, तो एक it's good, but more than that, what is important in school, every school, people, all the stakeholders must do some kind of a psychometric testing. Okay, psychometric testing, and also get specialized career counseling seminars, so that people exactly know, the children exactly know that they if you put fish, if you ask fish to climb a tree, they can't climb a tree, and if you ask somebody to swim into the ocean, you can't. So every human being has a different set of skills, different likings, different personality, different attitude. So if you have the right match, you will always get the right kind of people. So हमारे कोटा में भी काफी issues आते हैं. Lot of people come because of parental pressure, peer pressure, without even having that kind of potential to join the IITs and NEETs and things like that. And then they end up in a kind of a sort of new word which we keep hearing, depression, and even some of them go beyond that also. So to avoid those kind of wrong things, a child must be, child, when I say child, means after from 9, 10, 11, 12 onwards, he should be able to, the parents, teachers, everybody should support him in choosing his career. They should not be imposed, like you are doing something which is very different. The other people in your team, there's somebody I know who helps out in the digital thing. So she has found a career in that field. There are numerous fields. We should not just run after those old this thing, that because your father wanted to become a doctor or your father wanted to join IIT and he could not, so he forces, or he sees his son joining that. So there are numerous careers, and of course armed forces, we generally do not advertise that much. So that is one of the things that the youth does not even come to know कि अच्छा ये भी option है हमारा as a career. And movies and half-cocked information creates a different perception कि आर्मी की life ऐसी है, खतरनाक है, पता नहीं क्या होगा. So movies create a different perception. Some people you talk, they have no knowledge, they create different perception. And so army is a way of life. It's a way of life. It is not like जैसे आप corporate में रहते हैं, जैसे आप किसी भी civil organization में रहते हैं. So we have lawyers, we have doctors, we have engineers also, we have people who fire big guns, we have drivers, we have everything. It's a way of life. So you have place for everyone. So one should not get worried about it. Yes, of course, as an officer, we need to do many things. Okay. So we have a different set of skills, and of course, a different kind of a lifestyle. And regarding the selection process, इसके मतलब किस तरह कोई बच्चा उसकी राइट तैयारी कर सकता है? बिल्कुल, बिकॉज आप माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं काफी, है ना. बट जैसे कि जब बच्चा 12, 13, 14, 15 साल का होता है, या तो ऐसे जनरली लेट्स से सिविलियन घरों में, तो ऐसे माइंडसेट और इसकी आई डोंट नो कितनी बातें होती है ना. हाँ बिल्कुल. और ना ही स्कूल में कोई ऐसा पर्टिकुलर कोर्स होता है उस टाइम पे कि माइंडसेट, MBA वगैरह में तो आजकल आ गया है साइकोलॉजी और ये वो. तो और ऑब्वियसली आप ज्यादा जानते हैं कोटा में क्या चल रहा है ग्राउंड पे. किस तरह इसकी तैयारी की जा सकती है? बिकॉज अदरवाइज तो फिर गेस वर्क ही है कि हम ठीक है. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. पीपल हैव दिस थिंग. तो क्या होता है कि जब मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, तो पेरेंट्स आते हैं, इनफैक्ट वो कहते हैं कि इसका पढ़ाई में बिल्कुल शौक नहीं है, तो ये इंजीनियरिंग तो कर नहीं सकता, मेडिकल में भी नहीं जा सकता, तो ये फौज में चला जाएगा, है ना. इसको तो बस इस तरह की चीजें पसंद है.
So this is again a wrong perception. So whether a child has a right kind of, so what should be done? What should be done? Let's come to that specifics. As a child, parents, teachers should focus on holistic development. They should not just focus कि भाई पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो. पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, टीम गेम्स, टीम स्पोर्ट्स, इंडिविजुअल गेम्स, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, है ना. उसके अलावा आप बच्चे को स्कूल में जो एनुअल डेज होते हैं, थिएटर्स, डिबेट्स, एक्सक्लेमेशंस, इनमें पार्टिसिपेट कराइए. क्विजेस, तो हर चीज में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब बच्चे का सही मायने में डेवलपमेंट होता है. अगर आप सिर्फ कहो कि भाई साइंसेस ले लो या ये जो 5, 10, 15 हमारे सब्जेक्ट हैं, इनको पढ़ो, इन्हीं में पूरे ब्रह्मांड छुपा हुआ है, गलत है. ब्रह्मांड बहुत बड़ा है. We have lot of things. So you automatically, if you start doing other activities, somebody may just become if he's participating, he can become a good, confident person. He can speak well. He can become a radio jockey. He can be a good singer. He can be a good sports person. So we need everybody. So in schools, let them explore world. School में आप उनको schooling से हटाकर सिर्फ पढ़ाई के सेगमेंट में ना डालें. उनको स्कूलिंग करने दें, स्कूल में खेलने दें, कपड़े फटने दें, हाथ गंदे होने दें, शरीर पे मिट्टी लगने दें, पार्टिसिपेट करने दें, उनको फैंसी ड्रेस में भी पार्टिसिपेट करने दें, स्कूल के सोशल इवेंट में भी पार्टिसिपेट करने दें. डोंट डिस्करेज योर चिल्ड्रन, लेट देम डू, लेट देम एक्सप्लोर, एंड देन दे विल कम टू द राइट प्लेस themselves most of the time. And if they don't come at the right place, you will find the right person to tell you what is the right place for that right person. So इसलिए बहुत जरूरी है कि जब तक हम तो शायद अभी जो NEP है, NEP हमारा नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हो रही है, इट इज ऑल्सो टचिंग ऑन दीज थिंग्स. और बहुत सारी चीजों पर जो एक माइंडसेट है उसमें क्लैरिटी. माइंडसेट की हम बात कर रहे थे, साइंस, वी टॉक की ओके साइंस से अगर नहीं लिया, आर्ट्स या कॉमर्स लिया तो जिंदगी बर्बाद है. क्या कर सकते हैं आर्ट्स लेके, कॉमर्स करके? Thousands of careers are there, thousands of fields are there. In fact, interestingly, most people do not know that if you are to join NDA, you can be from any stream. You can be from arts, you can be from commerce. So most people don't even appear if you have chosen art or commerce, because they think that NDA तो science लेना बहुत जरूरी है. तो ये misconceptions हैं जो कि एड्रेस हो रहे हैं धीरे धीरे. And schooling is something which is very important. तो जो मेरा ओरिजिनल सवाल है कि आर्मी जो और डिफेंस के जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं, उस पे स्पेसिफिकली क्या आपको लगता है कि कोई बच्चा डेवलप कर सकता है उसको, या आपको लगता है कि थोड़ा बहुत मतलब ऑलरेडी रहता है उनमें, या नहीं होता है? ये बहुत पुराने टाइम में द ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स, आपने MBA में भी पढ़ा है और पता है कि पहले बोलते थे कि लीडर्स आर बॉर्न, लीडरशिप कैन नॉट बी थ्रस्ट अपॉन देम. So leadership can be thrust upon them. Leadership can be developed in them. It is not that leaders are always born. तो ये misconception है कि वो या तो if you are born in with a silver spoon or a gold spoon, then only you can have, or if you are born in the army background, then armed forces, तभी आप आर्मी ज्वाइन करेंगे, या एक तो आप these things, जैसा कि हमने कहा कि बचपन से अगर आप एक स्वच्छंद, एक फ्री एनवायरनमेंट में चाइल्ड को बड़ा होने देंगे, उसको आप पार्टिसिपेट करने देंगे, आप उसको स्टेज पे जाने देंगे, आपको क्लास के इवन छोटे लेवल पर हाउस कैप्टन, क्लास मॉनिटर, क्लास प्रीफेक्ट्स ये बनने देंगे. All these things help in developing a personality and leadership quality of a person, and which subsequently helps them to join armed forces. When you go for your selection in SSB, Services Selection Board, रिटर्न क्लियर होने के बाद, रिटर्न क्लियर कर लेंगे. हमारी बात वहां पर रह गई थी कि हमने जब काफी कई लाख लोग बैठे थे तो 7,000 रिटर्न क्लियर किया. 7,000 में से छटकर 300-400 लोग बच जाते हैं SSB क्लियर करने के बाद एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए. अब वो इतनी बड़ी संख्या में थी, इतने थोड़े क्यों रह जाते हैं?
because one of the things which is missing is the leadership qualities. And leadership quality का मतलब ये नहीं है कि हम don't get confused by political leadership or netagiri. Leadership quality involves decision making, confidence, your social adaptability, interpersonal skills, problem solving abilities, initiative. ये सारा कुछ एक लीडरशिप का हिस्सा बनता है और ये सारी चीजें डेवलप की जा सकती हैं अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे जितने लोग ये समझें कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। एक हम लोग जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं आजकल बहुत सारा वी डू लॉट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड पुट मनी की जहाँ पे हमें रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, रिटर्न्स कितना मिलेगा, बट people forget that the highest return you get is investing in yourself. That's the highest paying return. And it is, you know it for yourself. आप देखिए ना कि गूगल में यह सुंदर पिचाई है तो उन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया. He does not come from a royal family or something. Or one example, all of you, all of us who have invested in ourselves happens to earn more rather than putting in real estate, share market. Yes, आप करिए इन्वेस्ट, बट डू नॉट फॉरगेट टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इंप्रूविंग योर क्वालिटी, इंप्रूविंग योर स्किल्स, इन्वेस्ट, स्पेंड मनी ऑन योरसेल्फ, रीड बुक्स, गो टू मेंटर्स, लर्न न्यू थिंग्स. तो अगर आप ये सब करेंगे तो आपके अंदर कोई डाउट ही नहीं है कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज का डेवलपमेंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा. आप बेटर ह्यूमन बीइंग बनेंगे. तो ये खाली सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही लीडरशिप नहीं आती, बहुत सारी चीजें हैं. एग्जैक्टली. तो कि अभी चलते हैं कोटा में आपका जो एक्सपीरियंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप कोटा में कोचिंग चला रहे हैं एनडीए और आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि क्या आप ट्रेंड देख रहे हैं बच्चों में जो आपके पास आते हैं, काफी उस एज ग्रुप के बच्चे, क्या उनमें ऐसी नई चीजें देख रहे हैं जो आपको एक्साइट करती है? क्या कंसर्निंग चीजें भी आप देख रहे हैं कि ये थोड़े डिसअपॉइंटिंग है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? मतलब क्योंकि काफी स्पेसिफिक शायद ग्रुप आता है आपके पास तैयारी करने या तैयारी के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो आप एकदम वल्नरेबल, फ्रेजाइल प्लस एंथुसियास्टिक बंच से डील करते हैं रोज. What are you observing matlab nowadays? Yes, for last 10 years plus from 2010 onwards we have established Edge Academy. हमने Edge Academy कोटा में करी थी, and let me tell you we have had the highest number of selections in the country till date. The number of officers, more than 550 plus officers in Army, Navy, Air Force. और ये बहुत बड़ा नंबर है. अब you don't get confused कि भाई IIT में इतनी संख्या होती है, एनडीए में जाते ही बहुत थोड़े हैं. उसमें अगर 550 अभी तक ऑफिसर्स वी हैव बीन एबल टू सेंड इन द आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, फैंटास्टिक नंबर. नाउ द चैलेंजेस, one of the challenges is suddenly some people come, some students come, parents come, highly motivated, but they are motivation is in a different direction. They think that joining NDA does not, it is all about bronze, muscles, running, sports, football, cricket, and nothing to do with academics, nothing to do. So you got to clear, you have to be good. पढ़ाई भी आपको करनी पड़ेगी. It's a complete package. One thing. Second thing, it is not only that you clear your written part, you have to go through the SSB selection process, which is about 6 days tough process. So in that we talk about leadership skills. So we help prepare students in developing these skills. So that's why I have started a lot of leadership courses wherein I want every youth, whether he joins army or not, navy or not, air force or not, he should undergo, he should become confident, he should be able to talk with people, he should have communication skills, he should be able to have a kind of a confidence to speak in public, group discussions, and number of other things as part of your grooming and leadership. How you sit, how you dress up, how you talk, how you behave, mannerism, etiquettes, all these form part of this thing. So unfortunately, there used to be no sort of a structured course, but I have developed a very beautiful structured course, and I have got a fantastic response
and those who attended it, we had just done some time back one of the course, and we had about 30 students attending it, and from all over India. Achha. And their response has been fantastic, purely for leadership, and none of them was hardcore defense opti. That is, Achha. they didn't want to join NDA. The parents trusted and sent them to us. And I wish I could share with you the before and after pictures of these fellows. They came, some with long hair, some with this thing. They were scared to talk in public. They could not communicate well. Even if you ask them their introduction, कि अपने बारे में कुछ बताओ, I'm not talking about English, in any language, but they were unable to express themselves. So we brought about a lot of good and positive changes in their personality. And the parents, they have become the role models for their own school. So hopefully whenever I launch the next one, I'm going to get a fantastic this thing. So we keep a numbers limited. Now, coming back to the point of challenges about armed forces. So one is that the second challenge, people had a confusion about Agniveer scheme, that Agniveer or Agnipath is also applicable to officers entry, and they will only join for 4 years and then they'll be left out of job and something like that and not knowing what to do. So we have tried to clear, the government also is working on clearing this kind of a confusion, that officers entry is not at all impacted by Agniveer or Agnipath scheme. Okay. It is only for the Jawan entry. And a lot of people want to join. There is a very interesting saying, which all of us have heard, is that we all love Bhagat Singh and Chandrasekhar, पर हम चाहते हैं कि हमारे घर में भगत सिंह पैदा ना हो, पड़ोस के घर में भगत सिंह पैदा हो. Yes, armed forces do involve an amount of risk. I'll tell you a very short 20-second story. Yeah, sure. Once a journalist had asked the Amir of Dubai a very question, what do you think, what will be the future of your country? So he said, before I tell about future, I'll tell about past. He said, my forefathers came on camel. Then we had cars. I drive Mercedes. And my children will drive Range Rovers and Land Rovers, and their children will go back on camel. So the journalist asked me, I'm asking, what is the future? And you say you started with camel and you come back to camel. He said, very simple. The tough times bring strong men, and strong men bring easier life. Easier life brings weak people. Weak people bring tough times. The weak people bring tough times. So जब हमारे देश में अगर हमारे ये warriors तैयार नहीं होंगे, as we say that India is approaching, we are slated to become third largest economy in the world, global leader, just possibly after China and US in next 5-7 years. In 2030, we are already fifth largest, and we are moving. We are the fastest growing major economies in the world. We are doing fantastically well in everything. But when we grow, we need to protect ourselves. So हमारे लिए हमें warriors भी चाहिएंगे किसी भी सभ्यता को बचाने के लिए. If you did not have warriors, we know the outcome. So we need people to defend ourselves. If there were no Shivajis, if there were no Prataps, if there were no warriors, we wouldn't have been alive. It is only because of some people have protected us in past, and some people are protecting you even today, 24/7, irrespective of. We are sitting with a very comfortable clients. हमारे घर में AC लगा हुआ है, बारिश है तो हम अंदर हैं, गर्मी है तो हम protected हैं, ठंड है तो हमारे पास warming equipment है. Think of a man who is protecting your borders in sub-zero climate, -30, -40 degrees, in a high altitude region where you can't even breathe. A normal human being अगर वहां पर जाएगा तो वो collapse कर जाएगा. वहां पर वो लड़ रहा है in Siachen, in Ladakh, in various places. He is guarding us, protecting us throughout.
So that is only possible if we have the right kind of people, right mindset. Nation first. We have to protect our country, whatever it may be. Yes, we keep working. It is not that you don't. You need people everywhere, but you also need people to protect us. Yeah, fair enough. Yeah. सर थोड़ा अभी गियर चेंज करते हैं, चलते हैं आपकी आर्मी लाइफ पे. So you mentioned in your introduction as well that you have been participated in Kargil war, and thereafter in NSG as well. NSG. Yeah. Kargil war के बारे में सर बताएं कि what was where were you in life at that time, and कैसे कारगिल वॉर की शुरुआत हुई, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उससे, उसके बारे में बताएं. ओके. कारगिल वॉर की शुरुआत हुई थी 3 मई 1999, 3 मई 99, और इसको कल्मिनेट 26 जुलाई 99 कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं. और in last couple of years in Kota, I have been celebrating on Kargil Vijay Divas on a massive scale. और उसके पीछे भी एक कारण था कि एक नहीं, 3 कारण थे, क्योंकि करीब 10-12 साल पहले की बात है. मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था, ये है 2009 की बात, और मैं बच्चों से नहीं पूछ रहा था. एक कोटा में ही एक एनजीओ, एक अच्छे ग्रुप में था, और I was mentioning about Kargil war and things like that. So generally, as it came of discussion, because it had, so some people जो प्रबुद्ध जन थे वहां पर, उन्होंने they were little surprised कि ये कारगिल वॉर क्या था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या था. So it was shocking for me. I said, we lost so much of blood. We made sacrifice of 527 warriors, young men, in Kargil war, and in just a short span of 9 years or 10 years, people have forgotten it. Then I started addressing this issue, and we had done in UIT and got children from different schools from that year. And then, of course, post-Corona, 2020 onwards, we have had it online and other ways, other methods also. But now, of course, people are aware of Kargil war, so that ultimate aim of sensitizing people, what happened in 1999, was achieved. Now, people approach me and other people, they are aware. The city and the country is fully aware. Governments have also done their bit by telling the people and youth about Kargil war. Now, this happened in 99. It was a limited war. It was not a full-fledged war as such, involving the entire western border. It was limited to the line of control, or we call it LC, and a stretch of 100 miles or 160 kilometers. Now, Kargil is a town, but this war was fought all along this stretch of line of control of 160 kilometers. It had Bashko Valley, it had this Dras Valley and Kargil town, starting right from Jozila onwards till that place. So numerous battles were fought, very fierce battles. We can say this war is a totally different war, and of course every war you fight is a different war from the previous one, but this war was a very different war from any war we had fought earlier. Okay, and why is that? The reason it was different. First war, it was more or less televised, where you had the reporters and people telling this thing, a kind of a real-time information was available to the people. Second, the two countries which were fighting, both were nuclear war, nuclear powers, and nuclear powers, and world was fearing more than us. दुनिया डर रही थी कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान युद्ध लड़ रहे हैं, और कहीं अगर ये न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी में कन्वर्ट हो गई, two nuclear powers going on war could mean very, very devastating. Yeah. Okay. And third, we were able to restrict a conflict to a very limited area. How we were able to do it, we'll as we progress, we'll. And of course,
we were taken by surprise, no doubt about it, that हम धोखे में आ गए थे। और पाकिस्तान ने एक नेशनल हाईवे 1 अल्फा होती थी जो हमारी लाइफलाइन होती थी, उसको कट करके जो हमारा लेह लद्दाख का रीजन है उसको काटने की कोशिश करी। अब होता क्या है, मैं आपको एक पिक्चर अगर इफ यू आस्क, आई विल शेयर वन पिक्चर and that will help me to explain to you. Can we see this picture? Yeah, we can. Yeah. So this person you see in this picture or a photograph, it's a photograph. We are not in those days very fond of taking photographs. We did not have mobiles, so it is taken by a normal that cameras which existed that time. We are talking of 99, 24. I mean, winters have passed since then. So it was 99. We are in the 2023. And now this is the person you see is, if you can make out, it's me only. And I was posted somewhere there. Right behind me is a small patla sa sadak dikh raha hai. That is, we are somewhere near Jozila Pass, and temperatures dipping into minuses. And this small road was to be protected. Okay. And Pakis wanted to cut off this because when summers come, you need to ensure that you do stocking for winters for Leh Ladakh region, because winters में बहुत बारिश हो जाती है तो सड़क से मूवमेंट नहीं होता। तो ये रास्ता आपको प्रोटेक्ट करना था, इंडियन आर्मी का है। और पाकिस्तान ने सोचा कि जब कारगिल एरिया में कुछ एक ऊंची पहाड़ियां होती हैं, अच्छा आपको हाइट भी बता देता हूँ, जनरल ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस रीजन वाज फ्रॉम 16-17,000 टू 18-19,000 फीट, यानी कि 5,000 मीटर से 5,500 मीटर के ऊंचाई पर ये युद्ध लड़ा गया। नाउ पीपल गॉन एडवेंचर एट सच ऑल्टीट्यूड। यहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है और थोड़ी दूर चलने पर ही जो लोग जाते हैं उनकी सांस फूलती है। So it is not easy. Temperatures are dipping, and the area is quite barren. Okay, तो बहुत difficult life होती है normal conditions में भी, और इन normal conditions में, इन abnormal conditions में हमने युद्ध लड़ा था, और वो भी ऐसी जगह पर जहां पर दुश्मन पहले से आकर बैठ गया था, दुश्मन ने तैयारी कर ली थी और दुश्मन ने हमारे को धोखा देकर बंकर और स्टॉकिंग्स और सारी चीज करनी थी। तो आई विल जस्ट पुट फॉरवर्ड अनदर स्लाइड। दिस इज वन ऑफ माय कोर टीम, और पीछे अगर आप देखोगे इस पिक्चर में, अगर आप कुछ लाइनें नजर आ रही है ना, these are our antennas. We had different kind of antennas and other things. Here also I am there. This is me and my other people who are part of this team just before off-visit. Okay, and in fact, interestingly, we were not even aware that we are going to fight a war. Initial intelligence which we got was that कि शायद कुछ terrorist मुजाहिद कुछ बंकर्स कुछ चोटियों में आकर बैठ गए हैं। वो भी हमें एक गुज्जर बकरवाल वहां पे होते हैं, लोकल शेफर्ड्स बोलते हैं, नमग्याल करके एक बंदे ने आके बताया था किसी जगह पर कि कुछ लोग बैठे हैं और वो पाकिस्तानी हैं शायद। तो नोबडी बिलीव कि कोई पाकिस्तानी वहां पे आके बैठा होगा। तो जैसा मैंने बताया कि उस टाइम पे मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था और उनका काम, तो आप ऑलरेडी थे उस रीजन में था। तो राष्ट्रीय राइफल्स में होने की वजह से उनका दे आर स्पेशलाइज्ड ट्रूप्स टू फाइट टेररिस्ट, अच्छा, नॉट वॉर। उनका जो ट्रेनिंग होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे, आप देखिए हथियार सिर्फ AK-47 है और हमें बोला गया कि भाई आप जाओ, कुछ शायद थोड़े बहुत टेररिस्ट आके छुप गए हैं, उनको आप वहां से फ्लश आउट कर दो। तो टेररिस्ट को लड़ना एक डिफरेंट टैक्टिक्स होती है और दुश्मन जहाँ के रेगुलर आर्मी को लड़ना एक दूसरी टैक्टिक्स होती है। तो हम ढूंढने निकले। तो ये ब्यूटीफुल द्रास वैली की एक पिक्चर है, कितनी खूबसूरत लग रही है, वो भी नॉर्मल 35mm कैमरा, दीज आर नॉट नो लेंसेज नथिंग, एंड सम सोल्जर्स वॉकिंग ऑफ माय टीम। सो इट वाज ब्यूटीफुल। वी आर not clear about orders, we are not knowing what has happened, so there was a lot of tolerance for ambiguity. पता ही नहीं था क्या चल रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस लिमिटेड थी, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं था, बहुत कुछ एम्बिगुअस था, फॉगी था। तो आपको मतलब
उस टाइम पे क्या ऑर्डर्स मिले थे? व्हाट वर यू सपोज्ड टू डू? आपको वहां पर जाना है, कुछ जगह पर मुजाहिद टेररिस्ट नजर आए हैं, तो ये इनिशियल ऑर्डर्स थे, ये मई की बात है, ये शुरुआती तौर पर। तो हम लोग, अगर आप देखो नीचे बह रहे हैं, कोई मेकशिफ्ट ब्रिज बनाकर द्रास की तरफ जा रहे हैं, रिसोर्सेज हमारे पास इतने नहीं थे, तो कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर रखा है हमने, इस पिक्चर में हमने देखा है। तो आप को कुछ ऐसी क्लैरिटी नहीं थी कि आप किस लिए जा रहे हो। ये पता था कि कुछ टेररिस्ट आके बैठे हैं, युद्ध का तो पता ही नहीं था कि हम युद्ध लड़ने वाले। जब उन्होंने हमारे एक लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया को कैप्चर कर लिया था और उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया था, उनको मार भी दिया था, मारने के साथ साथ उनके उनके आंख कान उनके बॉडी पार्ट्स काट दिए थे, और बहुत जो कि हर तरीके से एक अनसोल्जरली बिहेवियर था, पाकिस्तान ने किया था। और तब जाके ये सीरियसनेस पता चली थी कि अरे ये तो पाकिस्तान पूरा, तो ये तो हम जस्ट इनिशियल फेजेस की बात कर रहे हैं, तब तक हमने एयरफोर्स भी नहीं लगाई थी, और बिल्कुल नॉर्मल, हमें उतना शक नहीं था। तो हमने कहीं वहां पे लोकल गूजर्स के साथ ये हॉल्ट भी लिया, चाय पी रहे हैं, चल रहे हैं। तो ये इट्स ए काइंड ऑफ ए लॉन्ग रेंज पेट्रोल, है ना। तो ये अभी हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, आप देखिए वहां कितनी सूखी पहाड़ी है, दैट एरिया इन मे 19। So you are carrying your own weight. Very difficult. Believe me, it is not easy. It looks easy. A soldier climbing, he has to carry his ration. He has to carry his everything with him. No operational or logistic support, and weapon also, and looking for enemy also. So two enemies. Can you spot them? So that's what I have said. Two enemies. तो एक एनिमी तो आपको पता है कि दुश्मन है आपका, उनको तो आपको ढूंढना है ही है। दूसरा एनिमी आपका वेदर कंडीशंस वहां पे बहुत खराब। You can't even breathe, you don't have any support system, and you're not clear, आपके पास आर्टिलरी या एयरफोर्स का सपोर्ट भी नहीं है उस वक्त, क्योंकि आप युद्ध में नहीं है, वो अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था। सो ये मेरी टीम है ना, मशीन गन्स और ये सब आते हैं बीच में, यू कैन सी मी है। तो वी आर जस्ट दिस थिंग, और दीज आर सम पिक्चर्स। सो वी डिड नॉट हैव, रिजल्ट्स आर एज इंपॉर्टेंट एज एफर्ट्स। So at some places we were able to get them. We had a bitter fight, and we are able to kill in some places. So there are some more, and the person standing behind is me only, with my team, of course. So it is not, in army we don't say me, we talk about we. I was just leading them. It was all the efforts of the men who were with me. We were able to kill some of them. So this is some pictures of post operations of July 99, after ceasefire and everything, and Pakistanis had withdrawn with my team. Again, you can spot me here with my webcam. So these were some of the things, and of course, at tough times, no communications. We did not have these mobile phones in those days or something like that. We could not communicate with home. Of course, we had the focus is different in wartime. You know, when we are in proper war, you are not actually thinking of home. You fight the war because you know you love the people behind. So आप युद्ध में इसलिए लड़ रहे होते हो because you don't hate your enemy that much. You love the people behind more. तो आप उनके लिए लड़ रहे होते हो. So you know the Pakistanis are also fighting. They have the instructions. So you have no personal enmity with any of the fellows there. In fact, I'll just share one more incident, very interesting incident, that Pakistanis, when we captured some of their posts, some places they got killed, we leave no one behind. हमारे जो soldiers युद्ध में शहीद होते हैं, we carry them in spite of anything. Even if we have to lose more blood, we carry them, we take them, okay, and give them decent last rites. पाकिस्तानी अजीब ही देश, अपने सोल्जर्स जो उसके देश के लिए लड़ रहा था, वो मर गए, तो उन्होंने क्लेम ही करना बंद कर दिया. उन्होंने माना ही नहीं कि हमारे सोल्जर्स हैं. ऑफ कोर्स लेटर दे हैड टू एग्री दैट दे वर 7-8 उनकी बटालियन, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की बटालियन थी वहां पर पूरे इलाके में, जो आके बैठ गए थे. पर जो उनके मरे, करीब हमारा एस्टिमेट कहता है 1200-1300 लोग हमने मार दिए थे इंडियन आर्मी का, जो अमेरिका एस्टिमेट इज अबाउट 750. वी लॉस्ट 527 यंग मैन in this war. 527 और करीब 1363 या 1400 घायल हुए, है ना. They got injured in the war. But about Pakistan, they had fudged the figures. They were telling lies all throughout.
they did not take back their bodies. So many times we have to get the मौलवी. हमारे पास तो फौज में सब हम कॉन्सेप्ट है. हमने अपने मौलवी को बुलाया और उनके लिए जो लास्ट वो पढ़कर उनको दफनाया. अपने दुश्मन को भी हमने इज्जत के साथ, because after he is dead, he is a soldier after all. He was fighting for his country. In fact, there was a battle which was fought around 5th of July 1999. Very famous battle of Tiger Hill. Yeah, I've heard about it. So one of the Pakistani officer, his name was Major Colonel Sher Khan. Colonel Sher Khan was his name, and his rank was Major. That Major Colonel Sher Khan. Now this person was a ferocious fighter. He was born somewhere from Skardu, and he inflicted heavy casualty on our troops. हमारे ऊपर उसने, हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, राजरेफ बटालियन थी, सेकंड राजरेफ और कई थी, तो उनके कई सोल्जर्स को उसने आखिर तक मारा और फाइनली वी वर एबल टू किल हिम, एंड ही वाज लॉन्चिंग कंटिन्यूअस काउंटर अटैक्स. एंड द वर्स्ट पार्ट इज, पाकिस्तान का एक ब्रेव सोल्जर, पाकिस्तान का, they refused to take him back. They refused to take him back. An officer. So we had to send him through Delhi. हमने उसको दिल्ली के थ्रू पाकिस्तान को भेजा. और जब हमने भेजा तो हमारे जो वहां पे ब्रिगेड कमांडर थे, एमपीएफ बाजवा ब्रिगेड, उन्होंने एक पत्र लिखा. This man was a very brave soldier and we respect him. और उसके जो बॉडी थी उसकी पॉकेट में वो पत्र डाला, लेटर डाला. पाकिस्तान चुप रहा. पाकिस्तान ने कहीं नहीं बताया कि ये ऐसा हुआ. और इमेजिन 2008 में करीब 9 साल बाद दे कन्फर्ड हिम विद निशाने हैदर. निशाने हैदर इज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड. जैसे हमारे देश में परमवीर चक्र होता है, उन्होंने 9 साल बाद उस बंदे को निशाने हैदर, उनका जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है ब्रेवरी का, वो दिया. 2 जनों को दिया था इस पूरे कारगिल युद्ध में, उसी 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का. सो आई एम टेलिंग कि a country who does not respect its soldier, how will that country survive? And you know that what is the condition of Pakistan today. आपको पता है कि पाकिस्तान की क्या हालत है. तो एक देश को अपने सोल्जर्स को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. वो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप उनको सैलरी मिल रही है या कुछ वो है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, इट इज देयर जॉब. No, it is not there. He has chosen that profession to protect you. He could have also chosen something comfortable. He could have chosen something more lesser riskier. He has chosen. He is there because he knows that in his profession he can be killed in action. We don't use this word shaheed in army. We call kill in action. So he can be killed in action also. He can get injured in action. He can. So it is part of his job that is there, but he has chosen it willfully. So we must respect. So that is one more appeal to each fellow जो आज हमारी ये conversation सुन रहे हैं. Respect a soldier wherever you see him. He is because of him we are doing our work comfortably. If he is traveling in a train, sitting, not because many times they do not get reservations, they have to travel at very short notice. बहुत कम समय मिलता है, तो उसको थोड़ी आप बैठने की जगह दे दो, थोड़ी सी आप उसको इज्जत दो, और कुछ नहीं, कोई आपसे बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा है. आप जस्ट एक्नॉलेज हिज कंट्रीब्यूशन इन प्रोटेक्टिंग अस. ये मेरा एक एम रहता भी है. मैं सभी से जब भी मैं बातचीत करता हूँ, टॉक करता हूँ, मैं 2-3 चीजों पे जरूर बात करता हूँ कि ईच वन ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट टू द डिफेंस ऑफ आवर कंट्री विदाउट इवन वियरिंग यूनिफॉर्म. हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम वर्दी पहने, ऑलिव ग्रीन वर्दी पहने आर्मी की, या व्हाइट स्पार्कलिंग व्हाइट नेवी की, या स्काई ब्लू एयरफोर्स की वर्दी पहने टू प्रोटेक्ट अ कंट्री, टू बिकम ए सोल्जर. ईच वन ऑफ अस कैन बिकम ए सोल्जर. वी नीड टू जस्ट लव आवर कंट्री. वन, acknowledge the sacrifices made by our soldiers, people protecting us. And one more way, एक तो मैंने बताया कि आप अगर एक सोल्जर को देखते हैं तो उसको आप थोड़ा सा रेस्पेक्ट दें. दूसरी चीज, हम लोग खूब घूमने फिरने जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं,
मनाली में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। आप जहां भी जाएं, चाहे आप दिल्ली जाएं, कहीं भी जाएं, तो एक वॉर मेमोरियल जरूर विजिट करें। और अगर दिल्ली जाएं तो दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल है, वहां पर जाएं, थोड़ा समय बिताएं कि हाँ वहां पर पत्थर के ऊपर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए, 28-30 हजार लोगों के नाम लिखे हुए। उन लोगों ने विलफुली हमारे लिए, हमारे देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस, अपनी जान दी है, सो दैट वी आर, सो जस्ट स्पेंड टाइम, यू विल फील गुड, यू विल फील हैप्पी। जितने लोग आज ये देख रहे हैं, आई एम श्योर हजारों लोग ये देखेंगे हमारा ये टॉक, कहीं भी देखें तो जरूर जाए और spend some time with our soldiers. And of course, with the living soldiers, if you are able to talk to him, he'll be very happy. He will like talk to you, share some things, which is not confidential, of course. Yeah. Make them happy. So these are small little things, small little gestures we can do to contribute to our national security. Very nice. I think सवाल तो और बहुत सारे हैं. I think maybe part 2 करना पड़ेगा. बस as a parting comment, how do you how can one get in touch with you to explore the path of defense, but also जैसे कि आपने कहा जिससे leadership, किस तरह कोटा में जो लोग हैं या बच्चे हैं, teenagers हैं, parents हैं, how can they get in touch? What is the best way to get started? Yes, simple. I have my presence. आजकल तो सब डिजिटल मींस पर सभी हैं. एज एकेडमी आप एज एकेडमी, हाँ, वील शेयर द लिंक ऑल्सो, एंड वी विल, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एज एकेडमी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज, ऑफलाइन कोर्सेज, और उस लिंक पर चले जाएं. बाकी मेरी टीम जो है दैट विल टेक केयर, दे विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद मी, तो विल बी एबल टू गाइड यू. आप सुनी सुनाई बातों पर ना जाएं. आर्मी को कैसे, हमने सुना है आर्मी में ज्वाइन करने के लिए ये चाहिए, आर्मी में ज्वाइन करने के लिए चश्मा नहीं होना चाहिए, आर्मी में नौकनी, एक नौकनी को लोग बहुत परेशान रहते हैं, फ्लैट फुट को लेके परेशान रहते हैं कि छाती का साइज ये होना चाहिए, ऑल काइंड ऑफ, ये सब सुनी सुनाई बातें होती हैं. मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं आज. तो यूथ मस्ट कॉन्टेक्ट द राइट पर्सन. तो edgeacademy.co.in वेबसाइट है, उसका लिंक हम शेयर कर रहे हैं. साथ में मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड अदरवाइज आई एम अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया एज वेल एज एवरीथिंग. एंड ऑफ कोर्स आप यहाँ पे आप कमेंट में डालेंगे जब आप नीचे, तो उससे भी हम कमेंट जरूर कांटेक्ट कर पाएंगे. यू कैन पुट इट ऑन दिस. सो जॉइन अस, वी विल हेल्प यू शेप योर करियर, whether you join armed forces or not, but understand that it is a way of life, and we can learn a lot of things in management in various fields have been driven from armed forces. Okay. Thanks a lot for your time. I think abhi ke liye itna hi. We will definitely be in touch and share the revised version of this podcast. Yes. Thank you, Pallav. Thanks a lot to Kota Junction, your team, and all the wonderful young men, women who are listening. Jai Hind to each one of you. And I'm sure we'll connect and we'll do something good for our country. हम अपने देश के लिए बहुत कुछ करेंगे. हमारा देश young country है, and we will take it much ahead where we are today. Jai Hind. Definitely. Jai Hind. Thank you.